your hands with water. Apply soap, rub your hands palm to palm, and wash the backs of both hands and in between your fingers. Then palm to palm with fingers interlocked. Clasp your hands together and rub, and then clean around the thumbs too. Rub your fingertips in the palms of your hands and finish off with the wrists. Rinse your hands really well with water and dry them thoroughly with a paper towel. Use the towel to turn off the tap. Your hands are now clean. Assalamu alaikum. Welcome my dear students of grade 2 in my online social studies and Saudi history class. How are you all? Hopefully you all will be fine and enjoying your online studies. Today's lecture is lecture number 2 of week number 10, and as you know, my name is Mrs. Sadaf Ambreen. So before starting of the lecture, there are some general instructions. So what are those instructions? Let's see. Here are some general instructions. First of all, my dear students, mark your attendance. Okay, dears, mark your attendance by clicking the link of the attendance website in the description box below. You have to mark your attendance till your first lecture, and it will be closed after the end of first lecture. Secondly, keep ready your book, notebook, pencil, eraser and sharpener to note down the answers of the questions. And if you have any question, please ask questions in WhatsApp group. Hope the instructions are clear to follow. What we will study today? What is our learning target? The same lesson, lesson number 10, directions of social studies subject will continue. And what we will do in this lesson, we will do work page number 52, exercise A, and that exercise is an oral activity. Okay, there are some questions in this exercise, but you don't write these questions. आपने इन क्वेश्चन को लिखना नहीं है. Okay, no need to write down. Okay, and the second subject, what we will do in Saudi history, question number 10. Okay, but this question you need to note down in your notebook. Okay, so we will do today two subjects, social studies and Saudi history. No need to note down the question answers of the exercise A in social studies copies, but you have to note down the question number 10 of Saudi history in your notebook. Understand? Okay. Before starting of exercise A on page number 52, I will give you a preview that what we have studied in lesson number 10, directions. So first of all, recall what are directions. Directions are the ways in which someone moves to know the position of a place or a thing. ठीक है, डायरेक्शंस ऐसी गाइडेंस है कि जिसके थ्रू कोई भी किसी चीज़ तक पहुंचने के लिए या उसको तलाश करने के लिए
यूज करता है. ठीक है, ठीक है. गाइडेंस हैं, डायरेक्शंस हैं, गाइडेंस. Okay, so we use some words to give directions, and we have to use some words to give directions to reach at that place or to find something what anyone wants to find. Okay, for example, here are some direction words. Okay, so we need to use these direction words to give the directions to anyone. ठीक है. Number first, on very first picture you can see here left and right. We use these words to give the directions, okay, to reach somewhere. Then top and bottom, we use these words for directions to find or search something where it is placed, at the top of something or at the bottom of something or in the between of something. And there are some other words like above, behind, below, in front of. So these are the words that we have to use to give the directions to someone, that he can locate the position of a place or a thing. ठीक है. Then special words for directions, but there are some special words that are shown in the campus. ठीक है. At the top of campus you can see that north, and at the downside, at the bottom of the campus, there is a south, and at the left side there is a west, and at the right side there is a east. So north, south, west, east are the special words for directions, and we also use these words in different map. And how to show the directions on map? The sun, as you see in the picture, the sun always rises in the east and sets in the west. And if you face the rising sun in the morning, the north is in your left and the south is on your right. As you can see in this picture, the boy is facing towards the sun. So at the front there is a east, and at the back side of that boy there is a west, and at the left side there is a north, and at the right side there is a south. So in this way, these special words of directions shown in the मैप शोन. ठीक है, ये इस तरह से मैप पे शो किए जाते हैं किसी भी चीज़ की डायरेक्शंस को या किसी भी चीज़ की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है. सो वी हैव स्टडीड लेसन नंबर 10 ऑफ डायरेक्शंस. ठीक है. देन वी विल स्टार्ट आवर वर्क, और दैट इज एक्सरसाइज A. सो लेट्स स्टार्ट. Get ready. Lesson number 10, directions. Work page number 52. Okay, and exercise A, oral activity. This exercise is about oral activity. No need to note down anything, just listen carefully. Okay, so now here is a picture of a Iceland. What is this? Iceland. What is this? Iceland. And what is Iceland? Iceland क्या है? An Iceland is a piece of land which is surrounded by the water. As you can see in the picture, there is a land in between, and all around of this land there is a water. ठीक है. ऐसी लैंड जिसके इर्द गिर्द चारों तरफ वाटर हो और सेंटर में लैंड हो, तो ऐसी जगह को, ऐसे पीस ऑफ लैंड को क्या कहेंगे?
island. Understand? So an island is a piece of land which is surrounded by the water. ठीक है, आप पिक्चर में देखें तो इट्स वेरी क्लियर दैट ऑल अराउंड द लैंड देयर इज अ वाटर. उसके चारों साइड्स पे वाटर है और सेंटर में लैंड है. ठीक है, सो ऐसी जगह को, ऐसी पीस ऑफ लैंड को हम बोलते हैं आइसलैंड. अंडरस्टैंड? ओके, लुक एट द मैप. इट इज अ मैप ऑफ एन आइसलैंड. ठीक है, ये आपकी बुक में मैप है. दिस इज अ मैप ऑफ अ आइसलैंड, एंड in this map you can see there is a land at the center, and some things are on the land, like there are mountains, islands, beach, forest and village, and all around this land there is a water. ये जो आपको वेवी लाइंस नजर आ रही है ना इस पिक्चर में, लैंड के बाहर, दे आर वाटर. ये क्या है? ये पानी है. ठीक है, इस पिक्चर में को शो किया गया है इन लाइंस के थ्रू. वाटर को शो किया गया है इन लाइंस के थ्रू इस पिक्चर में. ठीक है, सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ आइसलैंड. ठीक है, नाउ I have attached another picture of the campus. ठीक है, the special words for direction. You know that N stand for north, and S stand for south, W stand for west, and E stand for east. ठीक है, we need to use these special words to locate or to find out the position or a place of a mountains, island, village, forest and beach. ठीक है, हमने इन सब की, ये जो माउंटेन्स हैं, आइसलैंड है, विलेज है, फॉरेस्ट है, इनकी प्लेस को फाइंड आउट करना है, इनकी पोजीशन को फाइंड आउट करना है कि वेयर दे आर लोकेटेड, वेयर दे आर प्लेस्ड. ये नॉर्थ में है, ये वेस्ट में है, ईस्ट में है या साउथ में है. ठीक है, सो वी विल लोकेट द पोजीशन ऑफ दीज प्लेसेस बाय यूजिंग द कैंपस. ठीक है, हम इस कैंपस को यूज करते हुए इनकी पोजीशन को लोकेट करेंगे. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू विल डू इट वेरी इजीली. ओके, नाउ लेट्स फोकस्ड. ओके, ऑन नेक्स्ट स्लाइड. हियर आर सम क्वेश्चंस. ओके, that is exercise A, page number 52, oral activity. Answer these questions by looking at the picture of an island. ठीक है, and you have a clear guidance of north, south, west and east to answer these questions. ठीक है, आपके पास ये गाइडेंस है, डायरेक्शंस हैं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट की, टू गिव द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस. ठीक है, इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए. ठीक है, आपको पता है कि नॉर्थ टॉप पे होता है, साउथ बॉटम में, लेफ्ट साइड पे वेस्ट है एंड राइट साइड पे ईस्ट है. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज द आइसलैंड कॉल्ड? आइसलैंड क्या है? मैंने आपको बताया था ना, आपने पिक्चर में भी देखा था, अ पीस ऑफ अ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय द वाटर. ठीक है, ऐसी लैंड जिसके इर्द गिर्द वाटर हो. ठीक है, और वो सेंटर में लैंड हो. ठीक है, अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय द वाटर. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. इज द बीच टू द नॉर्थ? नाउ लुक एट द बीच इन द पिक्चर. बीच क्या है? नॉर्थ पे है. लुक है, देखें जरा, नॉर्थ साइड पे है. नो, ये तो बॉटम वाली साइड पे है. तो ये किस साइड पे हुई? South. So what we will give the answer that no, it is to the south. ये कहाँ पर है? साउथ वाली साइड पे है. ठीक है, then now next question is where are the mountains? अब now look at the mountains. Mountains कहाँ हैं? Tops of the campus there is a north. So ये तो टॉप पे हैं, तो ये कहाँ है mountains? Mountains are to the नॉर्थ. माउंटेन्स जो हैं वो नॉर्थ में हैं. एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखें जरा आप.
In which part of the land is the forest? कौन से पार्ट में फॉरेस्ट है? फॉरेस्ट तो बॉटम में है, बिल्कुल नीचे बॉटम में कौन सा पार्ट है? साउथ, ठीक है. एट साउथ देयर इज अ फॉरेस्ट इन दिस पिक्चर, ठीक है. एट साउथ पार्ट ऑफ द लैंड इज द फॉरेस्ट, ठीक है. साउथ साइड पे जो लैंड का पार्ट है फॉरेस्ट का वो है, ठीक है. देन you can see the question number 5. Where is the village? अब village किधर है? Village is also to the south side, ठीक है. वो village भी south में है. Then village भी नीचे है ना, नीचे वाली साइड पे है, ऊपर तो नहीं है, और बिल्कुल सेंटर में भी नहीं है, और एक साइड पे भी नहीं है कि हम उसको कहें कि ये वेस्ट में है, ठीक है. सो इट इज टू द साउथ. देन in which directions are the small island? Small island किधर है? Look at the top. Small island is to the north. So these are the questions and I have written the answer of these questions on the next slide. So let's see the next slide. Question number 1. What is the island? A piece of land which is surrounded by the water. Question number 2. Is the beach to the north? No, it is to the south. Question number 3. Where are the mountains? Mountains are to the north. Question number 4. In which part of land is the forest? At south part of the land is the forest. And question number 5. Where is the village? Village is to the south. And question number 6. In which directions are the small islands? Answer is small islands are to the north. Question number 6. In which directions are the small islands? Answer is small islands are to the north. Now exercise A, page number 52, that has done. ठीक है, this was oral activity. No need to write down these answers on your notebook. Just try to give the answer of the questions verbally, orally. ठीक है, आप इसको खुद देख के बताएं मामा को, पापा को, कि कौन सी चीज़ कहाँ है, नॉर्थ में है, साउथ में है, वेस्ट में है, ईस्ट में है, जब आप क्वेश्चंस का आंसर देंगे तो. ओके, सो no need to write down these answers on the notebook. Now time to learn the question number 10 of Saudi history. So what is the question number 10 of Saudi history? Very easy question. Name the 2 holy cities of Saudi Arabia. 2 holy cities. Holy cities means a scared cities concerned with religion. ठीक है, हम उर्दू में कहते हैं मुकद्दस और पाक जगह, ठीक है, रिलीजन के हिसाब से. जैसे कि हम वी आर मुस्लिम्स एंड वी फॉलो द इस्लाम एज अ रिलीजन. सो यू नो दैट सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो एन इस्लामिक कंट्री. सो हियर आर 2 होली सिटीज. ठीक है, कौन सी सिटीज हैं? मक्का एंड मदीना. सो आंसर इज मक्का एंड मदीना. Understand? And you can see here the picture of Makkah and Medina. So the answer is Makkah and Medina. So question number 10 is name the 2 holy cities of Saudi Arabia. Holy cities means मुकद्दस और पाक शहर उर्दू में, और हम इंग्लिश में कहेंगे scared with concern with the religion. ठीक है, हाँ, जो हमारे रिलीजन से जिसका बहुत ज़्यादा कंसर्न है, वो हमारे ये जो 2 मकाम हैं सऊदी अरेबिया में, जो 2 शहर हैं, वो कौन से हैं? मक्का और मदीना. ठीक है, और आपको पता है, डू यू नो दिस दैट इस्लाम स्टार्ट फ्रॉम द अरब्स. सो हियर आर 2 होली प्लेसेस. ठीक है, मक्का एंड मदीना. सो नोट डाउन दिस आंसर ऑन योर notebook. Okay, so and I told you before that how you will write down. You need to draw the margin line, write down CW topic, and question number 10 topic is you will write Saudi history, then question number 10, and then you will write in a very neat and clean handwriting by following the 4 lines. Understand? Good. Homework. Social studies activity
ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ आइसलैंड ऑन कॉपी एंड मेंशन द डायरेक्शन. ठीक है, एक पिक्चर आइसलैंड की बनाएं तो अपनी कॉपी पे, और उसमें डायरेक्शंस को मेंशन करें, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट. ओके, अंडरस्टैंड. एंड देन सऊदी हिस्ट्री में आपने यू हैव टू लर्न एंड राइट द क्वेश्चन नंबर 10 ऑन कॉपी. ठीक है, आपने लिखना भी है और इसको याद भी करना है, क्वेश्चन नंबर 10 को. अंडरस्टैंड. In our next lecture, we will do question answers and filling the blanks of lesson number 10, directions. Okay? So get ready for that. Any question? My dear, I told you before that if you have any question, you can ask me in the WhatsApp group. Okay? Thank you, my dear students. This is all about from my side. Take care. Allah Hafiz.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students, how are you all? I hope all of you good. Dear students, as you know, I am Mrs. Nishat Asmat. Today we are studying Unit 12, Week 11 and Lecture 2. Dear students, before starting the lecture, here are some instructions for you. So what are those instructions? Let's see. First of all, mark your attendance. Keep ready your books, notebook, pencil, razors and sharpeners and all the things related to your subject to note down your lecture. If you have any question, you can ask through WhatsApp group. Hopefully, you will follow the instructions. Dear students, before starting the lecture, I will give you a preview of Unit 12, Kindness. Islam teaches us to be kind to everyone. Islam teaches us to be kind to everyone. Allah is kind to those who are kind to others. Allah is kind to those who are kind to others. Our dear Prophet was very kind-hearted and taught Muslims to be kind not only to human beings but to animals and plants as well. Being kind to your parents and others. Your parents are the closest to you. They love you and take care of all your needs. Be very kind to them and do not disobey or hurt them. Speak to them politely. Okay? Pet animals. If you have pet animals, be kind to it. Feed it on time. Everyone likes a person who is kind and gentle. If you are kind to people, you can make friends easily. If you have pet animals, be kind to it. Feed it on time. Everyone like a person is kind and gentle. If you are kind to people, you can make friends easily. And if you have plants or trees or at home, water them regularly and do not break leaves and branches unnecessarily. Okay? I hope you will understand of the preview of Unit 12. Unit 12, Kindness, Exercise 2, page 54 on book. Dear students, here are right or wrong. Okay? Listen to it carefully and give me answer. You should be unkind to your servants. A. You should be unkind to your servants. False. Yes, false. B. Being kind to animals is the right thing to do. Listen to carefully. Being kind to animals is the right thing to do. True. Yes. Next, C. We should not greet our neighbors. We should not greet our neighbors. We should not greet our neighbors. False. Yes. Next one. All your family members deserve respect. Dear students, can you tell me all your family members deserve respect?
Exactly. True. Yes. If you are kind, everyone will like you. क्या अगर आप इतने अच्छे हैं आपको सब पसंद करेंगे अगर आप अच्छे हैं तो? Obviously, yes. If you are kind, everyone will like you. Your teacher, your parents, your friends. Okay? If you are kind, if you are good, everyone will like you. Yes, good. Yes, exercise 3, page 55 on book. Use these words to fill in the blanks. First one, friends, scream, parents, help, insult, kind and feed. First one A, you should be kind to your dash and listen to them and dash them if they need to you. You should be kind to your parents and listen to them and help them if they need to you. Next one, you should be dash to your pet animals and dash it on time. You should be kind to your pet animals and feed it on time. Next one, we must not dash at servants or dash them. We must not scream at servants or insult them. Last, if you are kind, you can make dash easily. If you are kind, you can make friend easily. If you are kind, you can make friends easily. Yes, good. Yes, student, this is activity. Paste some pics about kindness with humans, animals and plants. Paste some pics about kindness with animals, humans and plants. Okay? Dear students, you can also paste and you can draw. Okay? As you like. Yes, student, this is your homework. Exercise 2, page 54 on book, and also exercise 3, page 55 on book. Okay, this is your homework, but must read lesson 12 at least 2 times at home. Okay. Dear students, thank you for listening. If you have any problem, if you have any question, you can ask your Islamiyat teacher through WhatsApp group. Okay. Allah Hafiz.
Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. I am your computer science teacher and I welcome you all in part 2 of lecture number 9. Dear students, hope all of you are fit, fine, healthy and happy at your homes. Now let's start our today's lecture. Here are the contents that we are going to cover today. First of all, we will have a review of our previous lecture. After that, today you have to attempt an exercise on book. We are going to solve exercise D on book. So let's start with the review. What is it called? Color picker. C-O-L-O-R. Color. P-I-C-K-E-R. Picker. Color picker. What we call it? Color picker. Color picker is used to copy a color from one area to another. Last time हमने अपनी लेक्चर में किया भी था इसको, हम लोगों ने परफॉर्म भी किया था कि हमने एक एरिया से दूसरे एरिया में इसका किसी कलर को कॉपी करना हो तो हम इससे कलर पिकर से यूज करते हैं. एंड व्हेन यू क्लिक ऑन द कलर पिकर तो ये पॉइंटर चेंजेस इनटू आई ड्रॉपर शेप. ये भी याद होगा आप लोगों को, ये भी हमने किया था. किस में चेंज होता था? आई ड्रॉपर शेप में ये चेंज हो जाता है कलर पिकर. So what is color picker? Color picker is used to copy color from one place to another and copy that color to another place. Then we studied about airbrush. Next to the tools there are written brushes. When you click on this arrow, so many brushes appear, as you can see on your screen. So, and this one, when we click on it, the pointer changes into a spray can. We call it airbrush. Airbrush paints a picture with a spray effect. It gives the spray effect to the picture. Now, again, on this slide, you can see after brushes, that is written shapes. क्या लिखा हुआ है? Shapes. And there are so many shapes over here. And in our previous lecture, we studied about curved line. So what we call it? This one? We call it curved line. What you have to do, whenever you want to draw a curved line, you have to click on this curved line and then on the drawing area click the mouse again. You will draw a straight line and from the mid you can drag wherever you want to move, on the up side or on the lower bottom side. Now dear students, get ready. Open your computer science books as we are going to attempt an exercise on book chapter number 1. Sharp your pencils. Chapter 1 number 1, Windows Paint, Drawing Tools and page number 5. Exercise D on book page number 5. Let's start. Exercise D says, name these tools whose icon look as given below. So students, icon means the images as you can see under the statement. The first one is this curvy line. What we call this in the shapes group in MS Paint? Yes, very good. We call it curve. Curve. All of you write curve as it is a curve in the shapes group. Okay, now the second icon is of a spray can. This is a spray can, right?
Which tool help us to give the spray effect? What is the name of this tool? It changes into this. Yes, airbrush. Airbrush changes into the spray can. Very good. Right, airbrush. Now move on to the last icon. That is the shape of eyedropper. Which tool changes into the eyedropper shape? Who's going to answer? Very good. Color picker changes into the eyedropper. So it's color picker. The first one is the curve, second one airbrush, and the third one is color picker. Great. Now I'm giving you few minutes so you will complete your exercise B right now. Hope all of you have done it. Now here is a preview of our next lecture. In our next lecture, we are going to complete chapter number 2, as today our chapter number 1 has been completed. So, in our next lecture, we are going to complete chapter number 2. The name of the chapter is Windows Paint Editing Tools. So, and the topic is using the selection button. We are going to learn about editing tools and how to use the selection button, and all of this is on page number 8. So in our next lecture we are going to complete chapter number 2 or start chapter number 2. Okay, that's it. Now your question answer session begins in WhatsApp group. If you have any
ورتل القرآن ترتیلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی بچوں، کیا حال چال ہیں آپ لوگ سب، کیسے ہیں؟ میں آپ کی قرآن ٹیچر مسز مقصودہ ہوں. آپ لوگوں کو بیٹا جو بھی قرآن کا سبق پڑھایا جاتا ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کیا کریں، اور ہر روز آپ اسکول سٹارٹ ہونے سے پہلے، کلاسز سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ پہلے قرآن پڑھ لیا کریں، تاکہ باقی سارے سبجیکٹ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو کھول دے، سینوں کو کھول دے، تاکہ باقی سارے سبجیکٹ بھی آپ لوگوں کو بہت ایزی لگیں. ٹھیک ہے نا بچوں؟ اسی طرح کریں گے نا، سب سے پہلے قرآن پڑھیں، پھر اس کے بعد اپنے دوسرے سبجیکٹ شروع کر لیں. ٹھیک ہے، چلیں اب ہم پڑھتے ہیں اپنا سبق. جی بیٹا ناظرہ، قرآنی قاعدہ میں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ صفحہ نمبر 18 اور 20. آپ لوگ نکالیں صفحہ نمبر، پہلے پڑھتے ہیں 18. ٹھیک ہے جی بچوں، یہ ہمارے سامنے دیکھیں پیج کھل چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے پیج نمبر 18. ٹھیک ہے، تو چلیں پڑھنا شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ پہلے یہ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب دوبارہ سے ہم اس کو پڑھیں گے. آپ کو پتا ہے نا کیا کرنا ہے؟ یا زبر یا، ہا زبر ہا، کیا بنا؟ یا ہا. با پیش بو، یا ہا بو. صاد پیش سو، ہا پیش ہو، سوحو فا زیر فی، سوحو فی. ہا پیش ہو، با پیش بو، کیا بنا؟ خوبو. کاف زیر کی، خوبو کی. را پیش رو، با پیش بو، روبو. عین پیش عو، روبو عو. را پیش رو، سین پیش سو، روسو. لام پیش لو، روسولو. اسی طرح تازیرو، اعیذو. خبوثا، خا، خا کا مخرج جو ہے آپ لوگوں نے گلے کا جو سب سے اوپر والا حصہ ہے وہاں سے خا، اور عین وسط حلق سے، حلق کے درمیان والے حصے سے. خبوثا. مونیعا، مونیعا. میم کو بھی چھوٹا پڑھیں گے، نون کو بھی چھوٹا پڑھیں گے، آ کو بھی چھوٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، مونیعا. کسی حرف کو یہاں پر لمبا نہیں کرنا. وجیدہ، وجیدہ. لوعینا، لوعینا. حسونا، حا، حسونا. قتیلا، قاف زبان کی جڑ سے قاف، قاف پیش قو تا زیرتی قوتی، لام زبر لا، قتیلا. ٹھیک ہے. فوعیلا، فوعیلا. ٹھیک ہے، فوعیلا. اوفوقی، قی، اوفوقی. سوقیتا. ابھی میں اس لیے آپ کو بغیر ہجوں کے پڑھا رہی ہوں کیونکہ پہلے میں ہجوں سے پڑھا چکی ہوں آپ کو، اور اس لیے کہ تاکہ اب آپ کو صرف آواز کے ساتھ پڑھنا آئے کہ پیش ہے تو اس کی آواز کیا آئے گی، زیر ہے تو آواز کیا آئے گی، زبر ہے تو اس کو کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں اب ہجے نہیں کرا رہی. سو، سین کے اوپر پیش ہے تو سو، سو قی تو، سو قی تو. ذو کی رو، ذو کی رو. دوعی یا، دوعی یا. نو فی خوا، نو فی خوا. کالیما، کاف زبر کا، لام زیر لی، کیا بنا؟ کالی. میم زبر ما، کالیما، تا پیش تو، کالیماتو، کالیماتو. اوخارو، اوخارو. قری'a، یا نہیں پڑھی جائے گی یہاں پر، صرف حمزہ پڑھا جائے گا. قری'a. سئیلا، سئیلا. وَهُوَ، ہا، گلے کے سب سے نیچے والے حصے سے ہا. وَهُوَ، وَهُوَ. حُشِرَ، حُشِرَ. ہا اور ہا ان دونوں میں بیٹا فرق کیجئے گا. ٹھیک ہے. وَهُوَ حُشِرَ،
हुशीरो, नुज़ूरी रैल। जबान की नोक और सामने वाले जो दो दांत है ना, ऊपर वाले बड़े वाले जो दो दांत होते हैं, उनको उनकी जो सिरा है ना, उसके साथ आपने अपनी जबान की नोक को टच करना है तो जाल बोलेंगे। नुज़ूरी, ये मैं आपको बेटा सारी चीजें बता चुकी हूँ ना, ठीक है। जाल आराम से नरमी से पढ़ेंगे। नुज़ूरी, याईदु, याईदु, कुतिबा, कुतिबा, कुदिया, कुदिया, कुदीरा, कफ, कुदीरा, कुदीरा, कफ पेश कू दाल जेर दी, कुदीरा जबर रा, कुदीरा, ठीक है। इसको इसी तरह से अब आपने पढ़ना है। पहले आप हिज्जों के साथ पढ़ चुके हैं, फिर दोबारा आप बगैर हिज्जों के, बगैर स्पेलिंग के पढ़ना है, ठीक है। हाँ जी बच्चों, ये है पेज नंबर 20। हमने पिछले सबक में भी यही पढ़ा था, ठीक है। तो आज इसको भी इसलिए दोबारा पढ़ा रही हूँ, बगैर हिज्जों के, खाली हम आवाजों से इसको पढ़ेंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से स्पेलिंग के साथ भी और बगैर स्पेलिंग के भी आपको पढ़ना आ जाए। और ये भी बताऊंगी कि अगर वक्फ करना है, रुकना है, तो फिर हमने कैसे पढ़ना है। आज हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ना है हिज्जों के साथ, हमने ऐसे पढ़ा था, बा जबर बा, कौफ जबर कौ, बा कौ, रा जबर रा, तीनों को मिलाया बाकारा, ता दो पेशतुन, चारों हरफों को मिलाया बन गया बाकारातुन, ठीक है। अब हमने इसको पढ़ना है बगैर हिज्जों के, तो हम पढ़ेंगे बाकारातुन। और अगर हमने इस पर रुकना है, मतलब वक्फ कर रहे हैं, तो फिर हम पढ़ेंगे बाकारा, ठीक है। आज मैं आपको इस सबक में ये चीज सिखा रही हूँ। बाकारातुन है, लेकिन अगर हमने रुकना है तो हमने पढ़ना है बाकारा। ता जो है वो हा में बदल जाती है वक्फ की सूरत में, जब हम वक्फ करते हैं, ठीक है। और आहादुन, वक्फ किया तो आहद, ठीक है बेटा, समझ आ रही है ना। आहादुन है, रुकना है तो आहद, जैसे हम कहते हैं कुल हु वल्लाहु आहद, वहां भी आहादुन लिखा होता है, लेकिन हम पढ़ते हैं आहद रुकने की सूरत में। अब ये है सुरूरुन, सुरूरुन है तो रुकेंगे तो सुरूर, ठीक है। फिर ये तनवीन भी खत्म हो जाएगी, फिर हम सुरूरू नहीं पढ़ेंगे, रुकने की सूरत में ये तनवीन खत्म हो जाएगी, सुरूर, सुरूर, ठीक है। किताउन, किता, किता, तो जबर इंता हो जाएगा, फिर किताउन, किता, हुमुरुन, हुमुरुन, हुमुर, खुशुबुन, खुशुब, अमलुन, अमल, अमलुन, अमल, गबारतुन, गबारह, जैसे हमने यहाँ बाकारा पढ़ा था, गबारह, कुतुबुन, कुतुब, जुलालुन, जुलल, ज़बादुन, ज़बाद, दाल के ऊपर कलकला भी करेंगे, ज़बाद, क़दमुन, क़दम, कदम, ठीक है। दोनों ऊंटों को मिला लेंगे यहाँ पर, कदम, कदमुन है ना तो कदम। खुलुकुन, वक्फ की सूरत में खुलुक, खुलुकुन, खुलुक, हसनतुन, हसनह, हसनह, क़तारतुन, क़तारह, क़तारतुन, क़तारह, ज़माउन, ये हमजा है, यहाँ हम झटका देंगे, हम पढ़ेंगे ज़माह, ठीक है, रुकने की सूरत में, ज़माह, ज़माह, नसाबुन, नसब, नसब, बा के ऊपर भी कलकला करेंगे, नसब, कालिमातुन, कालिमाह, कालिमाह, मालाकुन, मालाकुन, मालक, मालक, इसके ऊपर कलकला नहीं करना, मालक, मारादुन, मारद, मारद, बशारुन, बशर, बशारुन, बशर, कसमुन, कसम। आप लोग पढ़ रहे हैं ना मेरे साथ, हाँ, साथ साथ बेटा पढ़ें, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और बाद में भी फिर आपने इसको याद करना है। कसमुन,
कसम, राजुलुन, राजुल, राजुल, हराजुन, हा वस्ते हलक से, हराजुन, हरज, जीम के ऊपर कलकला करेंगे, हरज, हरज, ठीक है, रॉ को पुर पढ़ते हुए, हरज, दियातुन, दिया, आशिरुन, आशिर, उजुनुन, उजुन, लाइबुन, लाइब, लाइब, रुसुलुन, रुसुल, रुसुलुन, रुसुल, जुदादुन, जुदाद, दाल के ऊपर यहां भी कलकला करेंगे, जुदाद, जुदादुन, जुदाद। ठीक है बेटा, ये बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको इसी तरह से याद करना है और पढ़ना है। ठीक है जी बेटा, अब हम चलते हैं अपने दूसरे हिस्से हिफ्ज की तरफ, और हिफ्ज में आज हम याद कर रहे हैं सूरतु कुरैश। पहले भी कर चुके हैं और आज फिर दोबारा कर रहे हैं सूरतु कुरैश। ठीक है, पढ़े आप लोग मेरे साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लीइलाफी कुरैश। अब पूरा मिला के बोलेंगे, लीइलाफी कुरैश ईलाफिहिम रिहला तश्शिताई वस्सैफ। फिर से पढ़ेंगे, ईलाफिहिम रिहलतश्शिताई वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब, रॉ को पुर पढ़ेंगे, रब्ब हादल बैत। अब पूरे को पढ़ेंगे, फलयअबुदू रब्ब हादल बैत अल्लज़ी। मद नजर आ रही है बेटा आपको? ये ऊपर मद है, ठीक है, इस मद को आपने, मद की वजह से हम इसको खींच रहे हैं, लंबा कर रहे हैं। अल्लज़ी अतअमहुम, तो के ऊपर आपने कलकला करना है, अतअमहुम मिन जू। अब फिर पढ़ेंगे, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू। ये आपको पिंक कलर की शद नजर आ रही है? हाँ, जहां पर मीम के ऊपर शद हो वहां गुन्ना करते हैं। ठीक है, यहां हम गुन्ना करेंगे, ध्यान से सुने। अतअमहुम मिन जू। अब आगे भी देखें, आइन के नीचे दो जेर हैं और आगे वाव है, वाव के ऊपर भी शद है, तो यहां भी हमने गुन्ना करके पढ़ना है। अब ध्यान से सुनिएगा, मिन जूइम व आमनहुम। फिर देखें, मीम के ऊपर फिर से पिंक कलर की देखें शद है, तो यहां भी क्या होना है आपको बताया ना, अभी क्या होगा, गुन्ना। तो अब हम गुन्ना करके पढ़ेंगे, आमनहुम मिन खौफ व आमनहुम मिन खौफ। नून के बाद खा जाए तो गुन्ना नहीं करना। व आमनहुम मिन खौफ अल्लज़ी अतअमहुम। रुकना है तो यहाँ रुक जाइए, सांस छोटी हो तो। फिर से पढ़ेंगे, अतअमहुम मिन जू। ठीक है, अब रुक गए हैं तो अब गुन्ना नहीं करेंगे, अब पढ़ेंगे, व आमनहुम मिन खौफ
ایک دفعہ میں پڑھ رہی ہوں, آپ دھیان سے سنیں پورا. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. ٹھیک ہے بیٹا, آپ نے اس طرح میرے ساتھ بھی پریکٹس کرنی ہے, میری آواز کے ساتھ بھی, لیکن آپ کوئی قاری صاحب کی نکال کے بھی یوٹیوب سے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. آپ نے اسی طرح سے اپنی پریکٹس جاری رکھنی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بیٹا آپ لوگوں نے ہوم ورک کرنا ہے سورۃ قریش آپ نے اچھے طریقے سے زبانی یاد کرنی ہے صحیح قرات کے ساتھ تجوید کے ساتھ جس طرح آپ نے قاری صاحب کے ساتھ بھی ابھی سنی ہے میں نے بھی پڑھائی ہے اسی طرح آپ نے یاد کرنی ہے اور انشاءاللہ پھر آپ نے نماز میں بھی پڑھا کرنا ہے اور قرآن قاعدہ کا پیج نمبر 18 اور 20 آپ نے اوپر سے دیکھ کے پڑھنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا اللہ حافظ تھینک یو ویری مچ ہمیشہ آپ لوگ خوش رہیں اور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ فی امان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ